Thank you very much, South Asian Languages and Cultural Center. Thank you, Dr. Sikandar Singh Rai, and other participants who have joined us. And military attack on Darbar Sahib perception in Pakistan, it was entirely a missing site. And especially the researchers have been focusing on Charda Punjab, and much has been produced on this subject. But Lenda Punjab, what was the perception about the military attack on Darbar Sahib was totally missing, and no study has been taken up. So this is very good topic, and I think that we will be discussing different aspects of this Punjab, Lenda Punjab. इस गुफ्तगू में थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को लेके चलेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे. I have consulted actually few personalities, media men and different writers as oral accounts, and then I have consulted two mainstream newspapers, the Pakistan Times and Daily Noya Waqt Lahore. So we will see that what kind of news were being published by both of the papers, and what were the feelings of the people of Pakistan, especially the Punjab. तो हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट की जो तारीख है उसका मेरे ख्याल के मुताबिक जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो मिनॉरिटी मेजॉरिटी का मसला रहा है, और इसी के ऊपर ही सारी पॉलिटिक्स घूमती रही है. और जो मिनॉरिटी है वो दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस. मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि ब्रिटिश ने यहाँ से डिवाइड एंड रूल के तहत हुकूमत की, बल्कि मेरा ये है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो दिस सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड ऑन रिलीजियस बेसिस, और उसके बाद जब नेशनलिज्म का तस्वुर आया तो उसके बाद जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज थी या रिलीजियस कम्युनिटीज थी उन्होंने रिलीजन की बुनियाद के ऊपर अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया. और फिर आपने देखा कि खालसा नेशनल पार्टी, फिर उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ये दैट वाज डोमिनेटेड बाय द रिलीजियस सेंटिमेंट्स बेसिकली. तो इसी तरह अब अगर हम देखते हैं तो आज भी मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का मसला चल रहा है, और जो रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं वो बाइज्जत जिंदगी को के लिए स्ट्रगल कर रही हैं कि उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे डील ना किया जाए, बल्कि उनको इज्जत दी जाए और उनके जो रिलीजियस स्थान हैं उनको इज्जत एहतराम दिया जाए. ये बुनियादी तौर पे आपको क्रक्स नजर आता है ये चीजें. तो आज की जो गुफ्तगू है उसमें से जो मैं आपको मुख्तलिफ न्यूज़ भी जो मुख्तलिफ अखबारात में छपती रही उसका मिजाज देखने के लिए आप देखेंगे कि दरबार साहब के ऊपर जब हमला होता है तो उसकी कैसे यहाँ पे कवरेज होती रही है और उससे हम परसीव क्या करते हैं. सो आई हैव डिवाइडेड दिस डिस्कशन कि जो हमला है, जो लफ्ज़ से हमला है, अटैक है, और जो वहाँ पे जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला या उससे पहले आनंदपुर साहब की जो एक डिमांड्स थी उनको ऑल इंडिया लेवल के ऊपर कैसे देखा जा रहा था, उसको कैसे लिया जा रहा था, और क्या ये किस जो पैराडाइम में ये फिट आता है. फॉर एग्जाम्पल पहला उसका है कि वॉर, इन्वेजन अटैक होता है और उसके बाद अटैक इज कन्वर्टेड इनटू अ वॉर. तो इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज, जो जंग होती है, और फर्स्ट अटैक or invasion, and that is transmuted into a war. Or impact
on society war का ये होता है कि war is not a permanent, therefore confident the war starts. There is no permanent stress on the society because most of the social organs function in normal way. So there is no permanent impact on the societies. Society is not non-operational, it continues. Then what is the result of war? One wins, but in fact, both win. Because both of the sides use heroism, bravery, damage on both sides, less or more, but both of the camps or both of the countries or both of the groups quote the bravery and different stories and myths regarding the heroism and success in the war. Before that, it was perceived that war was between haq and batil. यानी एक तरफ हक है, ट्रूथ है, और दूसरी तरफ जो है वो बुराई है, बातिल है. But now intellect concludes that this is a war between two right. Both camps are right because one is to survive and the other is to survive as an group. So both claim to be right. So both justify their positions, and this is the analysis of the people and especially the decision-making agencies of a country, that they should conclude positively and with positive sense who was wrong and what was wrong and what aspect was weak. By this attitude, a country can survive as a symbol of good governance. Next, causes of the war, causes lead to war. So first, poverty or scarcity of food. As subcontinent was attacked from the north side. The second is revenge. So as Alexander the Great attacked Iran or Persia. The third cause that may lead to war is a lust for grandeur, territory, as British did. And fourth is religious preaching, as Russia attacked on Ottoman Empire, and Russia basically wanted to make a way to hot waters, but the attacks were on the basis of religion. The fifth is collaborative war. So different countries make alliances, and that moves to declare war, as both the World War, especially First World War. So I conclude that for a good governance, groups existing in one country must be treated as equal, and they should be provided with just policies, and justice is the only way to promote peace in the country. So then next step, that's intellectual paradigm, is the human nature. Human nature sometimes is a problem with human psyche. Both fighting groups supposed to be right, because some portion of their demands can be justified, and intellectuals always justify. And if some group is defined, so definitely that defiance can be justified. So one thinks he is right, it's not bad if he thinks and he has demand, or one group has demand. The second position is one thinks all others are wrong. Okay, but this group goes further. What's the third position? Others are wrong, so they must be eliminated from the earth. So this is very dangerous, and this is especially dangerous for peace of the society. History, culture, religious,
religions educate all factions of society to facilitate others and establish peace. But one faction becomes stubborn and unleashed injustice. This faction is majority, and majority means government. So when I talk about majority, it means I'm talking about the Indian government. So reaction comes, groups submit to government or majority, but sometimes one group does not submit, they react. That group challenges. Okay, this decision was unjust, so I'm not going to accept it. So mode of reaction, if one group is defined, so what kind of reaction comes from that group? So one can be peaceful, second can be violent, and third position can be starting peaceful struggle, but ultimately they take weapon and their peaceful struggle becomes violent. So when they become violent and or they took arms, so which motivating factors they have that they are ready to sacrifice their lives? So one is racial injunctions, because Punjabi or something other Sabhyachar or some other cultures, they have their background. So first motivating factor from they get some pride, that's racial injunctions, bravery, heroic past. The second is religious stance, to save religion and community. So when the problem becomes, let's see if there is a material, problems can be divided into different groups, but mainly one is material problem, material issue can be solved immediately, but religious issue cannot be solved easily, because religion is a name of boundary, and you cannot eliminate that boundary from that place. That is that has eternity, that has eternal position. So when a group gets injunction or encouragement from religion, so definitely this cannot be easy to solve this problem. So the state or majority or government will have to come to terms with that group. And if the state reacts violently against that group, so definitely it can never be solved. So why militarism? Why a group takes weapons? Because of their survival is based on armed struggle. The second is no peaceful way. Nobody is there to have dialogue with them, and their demands are being declined by the majority, mean government, and they have only one way to go ahead, and that is armed struggle. So June 1984, the circumstances were heading towards June 1984. There were only two that we talked about in start, that Sikhs of Punjab desired an honorable life in Punjab, and the second, they did not want to make any compromise on religion. So both things are very important. If Sikhs were being discriminated against in the society, so definitely they could not compromise on it, because they were brave. They had heroic traditions and past, and they had also a religious past,
and that was full of bravery, and they had been fighting against injustice. So definitely they could not compromise on their on the discrimination against being imparted by the majority community or government. So the second was religion, so they could not be compromising on religious issue. So first we talked about a war between two countries. The second comes civil war. So we can think, was it a attack on Darbar Sahib? Was it a war? Was it an attack or invasion? The second comes civil war. Was it a civil war? So what is civil war? Fight within a country, groups start killing each other. That is civil war. What can be causes? Injustice or violation, exploitation, usually against minority by the government or majority. The second is political chaos, the provocations, and third is bad governance. So we can say that if there would be injustices and barbarity imparted on the Sikhs, and their Pavitra Asthans were attacked, Gurdwara Sahib, that was attacked by the government, so definitely they could not offer any kind of compromise on it. And even the attacks were being reported even before Sant Jarnail Singh Bhindranwale did not take refuge in Akal Takht Sahib. So attacks were going on before June 1984. So civil war, that we cannot say it was a civil war. Then third comes genocide, ethnic cleansing. A group, majority or government victimizes one specific group. They deprive the group of. So what was the reaction? What reaction we can expect from this government policy or state policy? To embrace killing silently. This is unnatural कि एक ग्रुप को सारे लोग एक गवर्नमेंट जो है वो मारे जा रही है और वो चुप करके बैठे हों. This is unnatural behavior. So जो natural behavior है तो वो डेफिनेटली जो है वो सामने आता है कि वो इस चीज को ये नहीं हो सकता कि they will embrace killing silently. The second reaction, that shift from peaceful to violent reaction. If they react, so definitely that react must be peaceful. But ultimately, when injustice goes on and genocide and ethnic cleansing continues, and Sikh youth are being massacred, are eliminated from Chadda Punjab. So definitely the nature decides that human being becomes violent and there would be a violent reaction. So notable point is that material loss can be tolerated, but disrespect or elimination of religion cannot be tolerated. So it seems that June 1984 has the philosophy behind the attack on Darbar Sahib that Punjab should be eliminated or Sikhs should be eliminated, and at least they should be weakened to the extent that there should be no challenge, should be no challenge from the Punjab. So this can be perceived. So if we see that post-partition scenario after 1947, so attack from north, locals fought against these foreigners on the basis of cultural, religious traditions. But after 1947, Pakistan underwent. So all the struggles in Pakistan emerged on the basis of culture or language, and Bangladesh is an evidence of such struggles. But India
faced cultural as well as religious unrest. So majority was determined to impose Brahmanism. So this is once again the problem that was pointed out Baba Guru Nanak, who rightly pointed out that there were two problems with India. One, Mughal or government injustice, and second is Brahmanism. So the post-partition India on the religious minorities. The second is spirituality of Brahmanism that still exists and continues. The next problem was that all the exploitative powers seemed unified or emerged into one. This is very important point. Four organs were in fact as one power. What are the four organs? Hindu majority, second, Brahman or Brahmanism, third, government, and fourth, state. And if these were the four powers or four groups or organs, look into the crux of the situation. So these four organs are actually one. And that is whatever you want to say. That is Hindu majority. You can say all four organs are Brahmins. Yes, you can say. Yes, you can say that all four organs are government. Yes, you can say. And then state. Yes, you can say four organs are merged into one. So these four organs actually seem a four forces against religious minority, especially Sikhs. So all these four powers desire to curb the Sikh voice raised for justice and honorable status in India. So what was the expected reaction? If there is no rival, our group is so much weak, having no heroic traditions, then there is no problem. Government or majority dominates, and that voice is curbed, and there is no problem. But problem comes when a nation called Sikhs was there, whose religion teaches what Sikhism teaches. Sikh neither inflects barbarity nor tolerate barbarity. सिख जो है, सिखिज्म में जो उसकी बुनियादी तालीमात, उसमें कहा जाता है कि ना तो वो किसी के ऊपर जुल्म करेंगे नहीं करेंगे. तो दिस इज द बेसिक फिलॉसफी जो सिखिज्म जो है वो देता है. दूसरा ये है कि सिख विल हेल्प द डिप्रेस्ड एंड नेवर सबमिट एज स्लेव्स. दूसरा उनका ये है कि जो सिखिज्म का एक इंटीग्रल पार्ट है वो ये है कि वो हमेशा मजलूम की मदद करेंगे. ये उनकी मजहबी उनका फ्रीज है कि वो मजलूम की मदद करेंगे, खास उसका ताल्लुक मुसलमान हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक हो या फैक्शन से ताल्लुक होगा, तो ये उनका मजहबी फरीजा है कि वो मजलूम की मदद करेंगे. और एक गुलामी के लिहाज से गुलाम के तौर पर वो कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे. तो आप ये देखें कि जब एक कम्युनिटी का रिलीजन जो है वो ये कह रहा है, तो एक स्टेट को या मेजोरिटी को या गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स को समझना बड़ा आसान हो जाता है कि इनके रिलीजन को हमने कैसे लेके चलना है. आपने देखा है कि एविडेंस इज देयर कि जो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर होता था, तो जो सिख डॉक्यूमेंट, ये जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, वो ये बताते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर अमृतसर था उसको वो एम्बेसडर के तौर पे लेते थे कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर है दैट वुड बी वर्किंग एज एम्बेसडर बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो जब उनमें इतनी अकल है तो क्या दूसरी स्टेट जो इंडियन स्टेट है या दूसरे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि इनका रिलीजन क्या कहता दे सकते हैं. तो इस चीज को समझ के उनके बारे में पॉलिसी इख्तियार करना, इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. इसको बड़े हैंडल किया जा सकता था इस चीज को.
और रिजल्टेंटली कि टू इंटेलेक्चुअल स्टांसेस इमर्ज इन इंडिया, कि एक तरफ जो है वो ब्राह्मणिज्म है जिसमें जो 4 ऑर्गन सामने किया, उसको 4 ऑर्गन्स इनटू 1, और जो जिनकी डिमांड थी कि सिख जो है वो सबमिट करे, not only Sikh, all the religious minorities should submit to the Kendra Sarkar without any voice. And if there is a genuine demand by any community in India, so that they could not claim to be an equal status in the Indian society. So this was a problem. कि एक तरफ तो ब्राह्मणिज्म जो उनका मुतालबा था कि सबमिट किया जाए और मरकज के सामने कोई शख्स बोल नहीं सकता, और दूसरी तरफ उनके सामने जो था वो एक था जो सिख नेशन है कि जिनका धर्म ये कहता है कि राज करेगा खालसा और कभी गुलामी की जिंदगी वो बसर नहीं करेंगे। अब उनका जब ये एक उनकी मजहबी फिलॉसफी है, तो ये दोनों जो फिलॉसफीज या जो इंटेलेक्चुअल स्टांसेस हैं, ये दोनों एक्चुअली आमने सामने थे। जो 80s की पॉलिटिक्स है या इसकी जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं हम जून 1984 की तरफ। तो सिख कंसेंटेड टू सबमिट, ये नहीं है कि जो सिख हैं उन्होंने केंद्र सरकार को सबमिट नहीं किया। अगर उन्होंने सबमिट नहीं करना तो 1947 में वो हिंदुस्तान में क्यों जाते, जबकि उनको सारे लोग जो है ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ जाएं, हिंदुस्तान में अगर जाएंगे तो आप 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर 100% भी आपको वो फैसिलिटेट करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में आते हैं तो आप आबादी के लिहाज से एक रीजनेबल साइज होंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा और आप उसमें बाइज्जत तरीके से रह सकते हैं। और जितने भी जो सिख स्कॉलर्स थे, इवन जो मेजर शॉर्ट थे जो सिख स्पेशलिस्ट समझे जाते थे, उन्होंने भी आके ये कहा, और उनके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर सिख वो सुसाइड करना चाहते हैं तो हम उनको नहीं रोक सकते। तो मतलब ये सारी चीजें मौजूद होने के बावजूद अगर वो हिंदुस्तान में गए हैं तो डेफिनेटली सबमिट किया, लेकिन एज एन इक्वल सिटीजन, नॉट एज स्लेव्स। उनका ये था कि हम एक बाइज्जत शहरी के तौर पे जिंदगी बसर करें। और स्टिल जो संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले, उससे पहले के जितना भी सिनेरियो है, दे वर सबमिटिंग टू द केंद्र सरकार, बट एज एन इक्वल सिटीजन, नॉट एज स्लेव्स। लेकिन अब आप देख लें कि थोड़ा सा जो एक वीक एस्पेक्ट हमें आता है कि जो इस चीज को बहुत पहले ही जो सरदार कपूर सिंह की जो पार्लियामेंट में तकरीर है, दैट इज एविडेंस। लेकिन उससे पहले भी आप देखें कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसमें 1947 में जो सिखों ने माउंटबेटन से अपील की कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, और माउंटबेटन ने वही अर्जी जो है वो जवाहरलाल नेहरू को दे दी। तो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। उन्होंने कहा जी कि हमने एक दफा मुसलमानों को रिलीजन की बुनियाद के ऊपर हमने फैसिलिटीज दी और वो हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ा। हम हिंदुस्तान में रिलीजन की बुनियाद के ऊपर कभी भी कोई ये डिमांड्स पूरी नहीं करें, ठीक है। और अब आप देख लें कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक राइटिस्ट पार्टी है और उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन की बुनियाद के ऊपर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, लेकिन जो उनकी पॉलिटिक्स है वो जो है वो पूरी राइट विंग की पॉलिटिक्स है। तो आप ये देखें कि ये सारे जो स्टेट इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो उनकी जो पॉलिसी क्या थी, उनके लिए एक्चुअली पंजाब वाज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेट की जो मार्शल स्टेटस ऑन रियलिज्म और पंजाबी नेशनलिज्म और खालिस्तान मूवमेंट वाज इन प्रोग्रेस, and it was not initiated with the help of foreign powers. It was their धर्म, it was their religious injunctions, राज करेगा खालसा। और ये हमेशा याद रखें कि जो रिलीजियस मूवमेंट है, कोई भी रिलीजन उठता है तो उसकी अल्टीमेट जो डिजायर होती है वो ये होती है कि अपना मुल्क होना, जहां पे वो अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें और अपनी जो लाइफ है उसके मुताबिक वो गुजार सके। बेशक वो इस चीज को जाहिर करे या ना करे, पूरी दुनिया का ये ह्यूमन साइकी है कि जो एक रिलीजन इमर्ज होता है उसकी अल्टीमेट ख्वाहिश
या उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है कि एक अपना मुल्क कायम करना और उसमें अपने मुल्क के मुताबिक एक सोसाइटी कायम करना ताकि वो अपने मजहब के मुताबिक बाइज्जत जिंदगी बसर कर सके। तो दूसरा ये था कि एक तो मार्शल स्टेटस था पंजाब में और दूसरा रिलीजियस बेस्ड नेशनलिज्म जो है वो मौजूद था। ये बहुत ज्यादा बातें होती हैं लेकिन मेरी इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि वहां पे जो खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो बाकायदा चल रही थी। स्टिल जो है वो एक दफा एक टीवी एंकर ने मुझे ये कहा कि करतारपुर साहब जो है ये खालिस्तान तहरीक बनाने के लिए ये बनाने के लिए इस तरह की बातें हो रही थी इंडियन न्यूज़पेपर्स में। तो मैंने उस एंकर से पूछा क्या मुझे बता दें कि वहां पे 5 खालिस्तान के जो लीडर्स हैं जो चढ़दा पंजाब उसके नाम बता दें। तो ही वाज साइलेंट। तो एक्चुअली जब मरकज जो है जो केंद्र सरकार है उसको ये देखना चाहिए कि धर्म क्या है और उसके बाद जो है वो जो ग्राउंड रियलिटीज क्या है और किस तरह जो है वो लोग जो है वो चल रहे हैं उसके मुताबिक उसको बिहेव करना चाहिए ताकि मुल्क में या सोसाइटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट आ सके। और दूसरा जो फैक्टर था जो स्टेट पॉलिसी की इंडियन या प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जो स्टांस होगा उसके पीछे वो था नेबरिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान या बॉर्डर स्टेट। पंजाब वाज अ बॉर्डर स्टेट और नेबरिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस लिहाज से ये ज्यादा जो पंजाब रिमेन ऑलवेज सेंसिटिव। और तीसरा है जो कनेक्टिंग रीजन टू कश्मीर कि जो कश्मीर का मसला पहले दिन से ये चल रहा है तो उसमें ये है कि अगर पंजाब मजबूत होगा तो कश्मीर में जो केंद्र सरकार की पोजीशन जो है वो कमजोर होगी। तो जो उनका धर्म है वो भी ये कहता है कि जो कश्मीर मजलूम है उनकी वो मदद करेंगे। तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्होंने भी एक तकरीर में यही बात दोहराई थी जब वो करतारपुर साहब में तशरीफ लाए थे। तो इस तरह जो है वो ये बहुत एक सेंसिटिव था जो केंद्र सरकार के लिहाज से। हालांकि अगर हम अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन को अब देखें तो इट डिपिक्टेड कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। It was not instigating any faction to demand Khalistan. Demands were relating to language, redemarcation of Punjabi-speaking areas, Kirpan, water issues, agriculture, and sacred status of Amritsar, like Banaras. So, if we see that all demands were addressing the Sikh nation and nothing reflected personal interest of any leader, especially Sant Jarnail Singh Pindrawale, and he never demanded Khalistan. उनकी आप तकरीरें सुने तो he never demanded। उसने एक बात की कि जो 1947 दी गलती असी नहीं दोहरावांगे। अगर केंद्र सरकार खुद सानू खालिस देना चाहती तो असी इनकार नहीं करांगे। असी 1947 वाली गलती नहीं दोहरावांगे। एंड सेम वाज अटर्ड बाय ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। सो जब ये जो बादल फैमिली इन्होंने उनके खिलाफ रिएक्ट किया तो आप ये देखें कि ये सारी जो एक जो कल्ट है और जो एक इंटेलेक्चुअल कल्ट है वो उसी लिहाज से चलती हमें नजर आती है। तो अब थोड़ा सा अगर उसको देखें कि जो जनरल कुलदीप सिंह बराड़ है उन्होंने बार बार वो ये अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि पिंडरावाले अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तो वो स्टेट विद इन अ स्टेट भी कैसे थी उसकी वो एविडेंस क्या देते हैं कि अगर किसी के साथ ज्यादती होती थी तो वो संत जरनैल सिंह पिंडरावाल से अपना मसला हल करवाते थे। तो ये स्टेट विद इन स्टेट। भाई अगर गुड गवर्नेंस हो, अगर लोगों के मसले हल होते हो तो उनको संत जरनैल सिंह पिंडरावाल जी के पास जाने की क्या जरूरत है। तो वो स्टेट की नाकामी नहीं देखते कि वहां पे एक बैड गवर्नेंस थी। और तो दूसरा ये है कि पंजाब का तो ये कल्चर है कि जो पंचायत सिस्टम है कि अगर वहां पे लोकली उनके मसले हल हो जाते हैं तो दे डोंट लाइक टू गो टू कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशंस। वो तो गांव के मुखिया के पास जाते हुए कहते हैं मसला हल कर दें। तो व्हाट वाज बैड कि अगर कोई लोग आते थे और संत जरनैल सिंह पिंडरावाला से के पास अपने मसले हल करवा जाते थे। लेकिन जो जनरल बराड़ है वो इसको कहता है ये स्टेट विद इन स्टेट अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद ये दूसरा वो ये कहते हैं कि जी संत जरनैल सिंह पिंडरावाले जो है वो अगर हम फौरी तौर पे हमला ना करते तो वो एक खालिस्तान का
का ऐलान करने वाले थे, जो उनकी हुकूमत है उनका ऐलान करने के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था? ऐलान सिर्फ यही होता है कि जो खालिस्तान की हुकूमत का ऐलान किया जाता है और फलां उसमें बंदे जो हैं वो उसमें उसके मिनिस्टर और उसके होते हैं। इसमें किस चीज की जरूरत थी कि अगर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले करना चाहते थे तो उन्होंने पहले नहीं कर सकते थे? वो एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करनी थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जितना भी ये जो दरबार साहब के ऊपर हमला हुआ है उसको कितने डेकेड्स हो गए हैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को अभी तक वो जस्टिफाई नहीं कर सके। तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस जून 84 अराइव्ड और वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हमने जेनोसाइड की बात की, सिविल वॉर की बात की और कंट्रीज की बात की। तो आई वांट टू कंक्लूड जो पैराडाइम है कि अटैक और इन्वेजन ऑन दरबार साहब, यस इट वाज अ वॉर, इन्वेजन because navy, artillery, infantry, BSF, air strike, tank, and was attack, it was invasion, and all these heavy weapons were used. Those were used in world wars. So this is very strange कि एक ग्रुप जो है वो बैठा हुआ है अंदर और आप उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और वो वेपन्स यूज कर रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होते हैं, और उसमें इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट। वो तो बैठे हुए थे और अटैक आप कर रहे थे। तो इस लिहाज से, और दूसरा, क्या ये सिविल वॉर थी? नो, इट वाज नॉट अ सिविल वॉर। पहला हमने किया कि यस इट वाज अ वॉर, लेकिन जंग दोनों ग्रुपों के दरमियान होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे आपने उनके ऊपर अटैक किया और खुद ही उसको फिर वॉर में चेंज कर दिया, और जो दूसरे मुल्कों के साथ जंगों में इस्तेमाल होते हैं वेपन्स, वो आपने वेपन्स यूज किए। सो इट वाज अ वॉर ऑन द साइड ऑफ द मेजोरिटी और द गवर्नमेंट। इट वाज नॉट अ वॉर ऑन द पार्ट ऑफ संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले एंड अदर स्टेट्स who took shelter in Akal Takht Sahib. So दूसरा है, was it a civil war? No, it was not a civil war. Sikh dissidents were not attacking in the streets etc. Rather they were sitting in the Golden Temple. Civil war वो होती है जहां पे ग्रुप आमने सामने और एक दूसरे को कत्ल वगारत कर रहे हैं। तो जितनी भी जो है आप देखें कि इफ द न्यूज़पेपर्स और कुछ जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जो हिंदूज को कत्ल किया जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि सिख धर्म में ऐसी बात ही नहीं है कि किसी बेगुनाह को कत्ल किया जाए। ये उनके धर्म का हिस्सा है और उन्होंने बहुत हद तक जो है वो इस चीज को प्रिजर्व किया है अपनी जो रिलीजियस फिलॉसफीज है। तो ये बिल्कुल जो है वो सिविल वॉर हम इसको नहीं कह सकते। ये किसी जो ग्रुप थे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला और उनके साथी, वो डिसिडेंट्स जरूर थे, वो अपनी डिमांड्स रखते थे, और वो डिसिडेंट्स होते हैं वो हमेशा उनको बातचीत के जरिए उनके कुछ बातें माने और कुछ बात मनवाने से ये मसला हल हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं रही। और तीसरा है, वाज इट अ जेनोसाइड, एथनिक क्लींजिंग? यस, इट वाज अ जेनोसाइड एज अ स्पेसिफिक ग्रुप नेशन community was attacked and government planned to eliminate the Sikhs. अब ये है कि अगेन वो क्या है कि मुतालबा ये था कि सिख्स आर नॉट सेकंड क्लास सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे मस्ट हैव इक्वल स्टेटस। खालिस्तान की डिमांड बिल्कुल नहीं की, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको ये था कि उनको दूसरे दर्जे का शहरी तस्लीम ना किया जाए। तो Sikhs did not attack, rather Indian army state attacked the people who were busy in worship. They were defending themselves. So अगर ये स्ट्रेटजी इख्तियार कर सकते कि जी की बातचीत हो जाए, तो बातचीत 10 दिन में हो सकती थी, 20 दिन में भी हो सकती थी, महीना भी हो सकती थी, 4 महीने भी हो सकती थी, लेकिन इसको खामखा ऐसे किया गया कि जी अगर फौरी तौर पे इनको एलिमिनेट ना किया गया तो वो जो खालिस्तान का ऐलान कर देंगे। प्रेस रिलीज के जरिए एक खालिस्तान का ऐलान करना था, पहले तो किसी ने नहीं किया इतनी जो। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज, अनफॉर्चुनेट दैट गवर्नमेंट टुक स्टर्न एक्शन against dissidents who took refuge in Golden Temple, and they had not
come out to attack anyone. So perception in Pakistan. So actually there was no social media at that time, and there were very limited sources to get news from other countries. So I have taken the data from Daily Noya Waqt, और ये जो 1942 में मेरा ख्याल अखबार ये शुरू हुआ था, और इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया. प्रो मुस्लिम लीग अखबार था ये, नोया वक्त, और आज भी ये छप रहा है. और दूसरा उस वक्त था रोजनामा जंग. जो मैंने डेटा लिया है वो द पाकिस्तान टाइम्स है, दैट वाज ऑफिशियल न्यूज़पेपर, और पाकिस्तान की जो सरकार है उसको वो ट्रांसलेट करता है कि जो स्टेट पॉलिसी है, जो द पाकिस्तान टाइम्स है. सो उस वक्त तो एक जो सहाफत थी उसमें रोजनामा जंग है वो उसने एक बड़ा अच्छा एक रोल प्ले कर रहे थे. अपने आप में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहा था, और उन्हें उनकी रिपोर्टिंग भी जबरदस्त थी. और जो नोया वक्त है वो पैसा खर्च नहीं करते थे, और जो उनकी ट्रेडिशनल जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है उसी को लेके चल रहे थे. लेकिन जो रोजनामा, जो डेली जंग लाहौर है, ये दे वर स्पेंडिंग मच मनी ऑन रिपोर्टिंग. उनकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोग रखे हुए थे, और फिर उन्होंने इंटरनेशनल डेस्क भी उन्होंने बनाया. और वो बाकायदा जो रोजनामा जंग है ये पंजाबी में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जी के बाकायदा बयान छापते थे. और जब तक दरबार साहब पर हमला नहीं हुआ तो फिर वो बताता है कि लोगों के जज्बात जो हैं वो एंटी सिक्स थे, कि यानी वो एंटी सिक्स थे. और लेकिन जो ही दरबार साहब के ऊपर हमला होता है तो टोटली वी सी अ मेजर शिफ्ट इन द एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ दिस पंजाब अगेंस्ट इंडियन सरकार, कि वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला और सिखों के हक में चली जाती है. और लोग ये परसेप्शन डेवलप होती है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है दरबार साहब के ऊपर हमला करना, और ये जो जुल्म है ये जो केंद्र सरकार जो है वो कर रही है. जो मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं उसमें अजीम चौधरी साहब हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं, बहुत अजीम सहाफ़ी हैं. रोजनामा जंग, उस वक्त ये रोजनामा जंग में थे. मोहतरम मुजीबर रहमान शामी साहब हैं जो चीफ एडिटर हैं रोज डेली पाकिस्तान लाहौर में. प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब हैं, आजकल चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झांग भी रहे हैं. और ही वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम व्हेन इन जून 84. देन आजम मलिक हैं जो पंजाबी के शायर हैं, वो ये कहते हैं कि उस वक्त पंजाबी का एक अखबार छप रहा था जिसका नाम था सज्जन. तो वो अखबार छप रहा था जिसके एडिटर थे हुसैन नकी. तो वो बहुत कीनली और बड़ा इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी इसकी सुर्खियां छप रही थी. बल्कि वो उन्होंने बताया कि जो सज्जन अखबार है उसकी जो बड़ी लीड थी वो ये थी कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जी की बहन का बयान. तो उसका बयान ये था कि साडे वीर ने चुमली सूली असी पत्थर कर लिया जी. तो सज्जन अखबार दी जी मेन लीड सी, बड़ी सुर्खी सी, वो सी के भिंडरांवाले संत जरनैल सिंह वाले भिंडरांवाले की जो बहन है उसका बयान है कि साडे वीर ने चुमली सूली असी पत्थर कर लिया जी. इट वाज द मेन लीड ऑफ डेली सज्जन लाहौर. Then I watched some programs. मुबशर लुकमान हैं, और इसके अलावा और जो दरबार साहब के ऊपर हमला है उनके ऊपर डॉक्टर मुबशर हसन ये कॉलम लिख रहे थे. डॉक्टर अफजल इकबाल ये एक्स एम्बेसडर थे, ये लिख रहे थे. और प्रोफेसर मोहम्मद सलीम ये they were producing columns in newspapers. तो books जो हैं hardly they shed light on Pakistan people's perception on दरबार साहब. So इसके ऊपर दो काम अभी हो सकते हैं कि एक तो जो compilation है या preservation का है that was published regarding June 84, and the second is news and interviews can be preserved from the people who are surviving and who had witnessed
द न्यूज एंड दिस इंसिडेंट। सो अगर हम इस चीज को माइंड सेट देखें कि जो लैंदा पंजाब है उसका जो व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ द पीपल, उसके जो डिफरेंट माइंडसेट्स हमें नजर आते हैं। वो एक पहला जो माइंडसेट है वो लोग हैं मुस्लिम्स और पंजाबी मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया 1947। ये वो लोग हैं जो इंडिया से माइग्रेट होके यहाँ पे पंजाब में आबाद हुए थे। इनकी भी आगे दो किस्में थी। एक वो लोग हैं जिनके ऊपर हमले हुए और दे हैड बिटर एक्सपीरियंस विद सिक्स, और वो जो ये जो तहरीक चल रही थी उसमें जितने भी जो केंद्र सरकार है वो दैट वाज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सिक्स, दे वर हैप्पी। वो कह रहे थे कि हाँ ठीक हो रहा है, ये जो है ना वो सिखों के साथ जो है अगर हो रहा है तो ये ठीक हो रहा है, इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। दूसरे वो लोग थे कि इन्हीं में से इसी कैटेगरी के वो लोग थे कि जो जिनके पुराने तल्लुकात थे वो ये कहते थे कि ठीक है हमारे साथ इन्होंने जुल्म ज्यादती की है लेकिन हम जो है वो सिखों की हमायत करते हैं। तो उन्हीं में जो पहला ग्रुप है जो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड दे वर अगेंस्ट द सिख, जिनकी दे वर अटैक्ड और उनके रिश्तेदार जो है उनका मैसेकर हुआ, उनमें दो ग्रुप बनते हैं। वो जो लोग हैं दे वर हैप्पी कि जी सिखों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, दिस इज गुड। और दूसरे ये थे कि बेशक उन्होंने सिखों ने हमारे साथ ज्यादती की हैं लेकिन इसके बावजूद वो हमारे पुराने हमारी उनके साथ दोस्तियां रही हैं, इकट्ठे रहे हैं, तो ये उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी जुल्म। तो उनकी जो सिंपैथी थी दे वर विद द सिख्स। दूसरी किस्म के वो लोग थे कि जिनको जो माइग्रेट करके आए थे और उनको कोऑपरेशन मिला, जो सिखों ने उनको उनके साथ तामन किया और उनको खुराक दी, उनको यहाँ से उनके ऊपर अगर हमले हुए तो उन्होंने उनको बाकायदा मुकाबला किया, उनके साथ मुसलमानों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया। तो वो इंदिरा गांधी की पॉलिसी के सख्त खिलाफ थे और उनकी टोटली हमदर्दियां जो है वो सिखों के साथ। दूसरी किस्म के हैं जो लोकल मुस्लिम से, दे वर नॉट माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड दे वर लोकल्स बेसिकली इस हिस्से में, so who had experienced a combined society। यानी इसकी जो लोकल मुस्लिम है इसकी भी दो किस्में हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने कंबाइंड सोसाइटी को एक्सपीरियंस किया हुआ था और जो जानते थे और एक दूसरे के दोस्त थे, अमृतसर और दूसरे शहरों में कई दफा जा चुके थे, बिजनेस कर चुके थे, उनके सिख दोस्त थे, उनकी फैमिली रिलेशंस थे, एक तो वो थे और वो प्रो सिक्स थे और संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले उनको बहुत ज्यादा इज्जत देते थे। और दूसरे वो लोग थे कि जो एंटी इंडिया थे लोग, जो 1971 की वॉर थी और 1947 की किलिंग थी, ये दोनों फैक्टर्स और इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, तो ये उसको वो जो केटर करता है फैक्शन विद इन पंजाब और पाकिस्तान, दे कंसिडर सिख एज पार्ट ऑफ इंडिया। तो they were happy that government and Sikhs were heading towards fight। वो कहते थे कि ठीक है इनके साथ ठीक हो रहा है। तो तीसरा वो था कि जो पब्लिक ओपिनियन और प्रेस है, जो प्रेस है वो आम लोगों की जुबान बोल रही है, जो कि अखबारात थे उस वक्त, they were anti India, happy on Delhi Sikh tussle, but they were not anti Sikhs। जो इसको मैंने ये देखा है कि वो इंडिया के तो खिलाफ हैं और टू सम एक्सटेंट जो इंडिया सिख टसल है उसको भी वो कह रहे हैं कि ठीक है इनको आपस में लड़ने दें, लेकिन इसके बावजूद वो जब इंडिविजुअली बात करते हैं तो दे आर प्रो सिक्स। वो सिखों के एंटी नहीं जाते कि जी वे ये जो है ये ऐसे। तो ये प्रेस जो है वो प्रेस का एटीट्यूड है। और जून में रमजान भी है, रोजे भी थे। तो पाकिस्तान टाइम्स को अगर हम देखते हैं तो ये एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर था लैंदा पंजाब में, और इनका जो मॉनिटरिंग डेस्क है वो खबरें जो है वो भेज रहा है। इट गेव फुल कवरेज टू संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले, बट द लैंग्वेज इट यूज्ड वाज इज एन एविडेंस इट वाज अ ट्रांसलेटिंग द पॉलिसी ऑफ इंडियन स्टेट, यानी दिल्ली की पॉलिसी को ये यूज कर रहा है। हालांकि उस वक्त जो जनरल ज़ियाउल हक का पीरियड है मार्शल लॉ का, और उनको कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया
और बाकायदा अमूमन ये परसेप्शन की जाती है कि उन्होंने सिखों को सपोर्ट किया और वहां पे इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने असला दिया। लेकिन मुझे जब ये मैं स्टेट की जो अखबारात पढ़ा हूँ तो मैं टोटली मेरी परसेप्शन चेंज हो गई है कि ये जो पाकिस्तान की साइड के ऊपर सिचुएशन वाज टोटली डिफरेंट। कि आप ये देखें कि दो न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान टाइम्स है, ये टुक न्यूज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया रेडियो एंड द यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। इनके जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये टोटली जो है वो जो है जो प्रो इंडिया है, या जो इंडियन स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं उनकी पॉलिसीज को। और दिस न्यूज पेपर यूज वर्ड्स, आप देखें जितनी भी न्यूज हैं उसमें से मोस्टली आपको नजर आएगा कि जो द पाकिस्तान टाइम्स है वो जब सिखों की बात करते हैं तो वो कहते हैं टेररिस्ट, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि ये टेररिस्ट हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस यूज करता है या दिल्ली के दूसरे अखबार यूज करते हैं, या जो स्टेट की पॉलिसी है, इंडियन स्टेट की पॉलिसी है या दिल्ली की पॉलिसी है, उसी को ये फॉलो करता है और ये कहता है ये सिख टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट का भी ये लफ्ज यूज करता है। और बल्कि जो 5 जून की खबर है उसकी बाकायदा एक लीड है, सिख एक्सट्रीमिस्ट सरेंडर्ड, ठीक है। फिर वो यूज करता है सिख म्यूटनी, फिर 8 जून को ये यूज करता है सिख म्यूटनी, और 3 जून को वो यूज करता है सिख मिलिटेंट्स। तो आप ये देखें कि जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी वो यूज कर रहा है, जो द पाकिस्तान टाइम्स है, वो टोटली हमें नजर आती है कि दे वर ट्रांसलेटिंग द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया। उसकी जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिज्म न्यूज प्रोजेक्शन दे रहा है वो इस तरह, लेकिन वो खबरें बराबर दे रहा है इसको। वो ये नहीं है कि उसको जो सिखों के खबरें नहीं दे रहा, उसको खबरों को वो बाकायदगी से उसको बहुत अच्छी जगह पे दे रहा है कि जैसे कि जो दूसरे मुल्कों में सिखों का जो एहतजाज है वो बड़ी प्रोमिनेंट उन्होंने दी कि हांगकांग, बैंकॉक, लिवरपूल यूके में पेट्रोल बम फेंके गए, वहां पे बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ, और पंजाब के बाकी शहरों में भी सिख दहशत गर्दों को फौज मार रही, बस वो इसको बाकायदा सिख दहशतगर्द जो है वो उसको लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है ये न्यूज़पेपर। अच्छा, दूसरी तरफ जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 जून की खबर शाया हुई है हिंदू मुस्लिम फसादात की, और जिसमें बम्बई में हिंदू मुस्लिम फसादात में 258 पीपल वर किल्ड, 258 लोग जड़े ने वो मारे गए ने उहदे च। जड़ा भिवांडी जड़े फसाद ने भिवांडी तो बंबे तक के फसाद फैले ने, और उसमें जो है वो एक्चुअली जो मई में एक हिंदू ने हॉली प्रॉफिट के खिलाफ बयानबाजी की जिसके ऊपर फसादात हुए, और उसमें 258 पीपल वर किल्ड, और दिल्ली में मुसलमान ताजरों की हड़ताल जारी है, ठीक। तो इस लिहाज से तो कोई खबर इस अखबार में नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद आप देखें कि ये जो खबर छपी है 1 जून को, जून 1 को 1984 को, और उसमें इतने लोग मारे गए हैं और इसका फॉलो अप नहीं दिया गया जो पाकिस्तान टाइम्स में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इतना बड़ा वाकया हो जाता है इंडिया में और उसमें 258 मुसलमान जो है वो लोग मारे गए हैं। उसमें कितने मुसलमान हैं, डेफिनेटली वहां पे मेजोरिटी मिनॉरिटी में है तो वो मुसलमान ही मारे गए। तो लेकिन इसके बावजूद जो है वो इसका फॉलो अप नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का जो कैपिटल जो स्टेट पॉलिसी है उस वक्त वो बड़ी केयरफुल पॉलिसी है, और उसमें दे डिड नॉट वांट टू क्रिएट अ रिफ्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग विद स्टेट ऑफ इंडिया, और उसमें किसी किस्म का वो जो है वो लड़ाई या इस तरह की कोई चीज जो है वो नहीं करना चाहते। मेरी जो परसेप्शन है उस लिहाज से ये मुझे नजर आती है। फिर जून 2 को 3 जून को खबर शाया होती है कि जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की स्टेटमेंट आती है कि आर्मी टेक ओवर इज अ ग्रेव चैलेंज टू द एंटायर सिख कम्युनिटी, वी विल फाइट टू द लास्ट मैन। ये संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की प्रोमिनेंट जो है उन्होंने तकरीर जो है वो छापी है। और उसके साथ साथ जो हरचंद सिंह लोंगोवाल हैं उनकी उन्होंने खबर भी छापी कि सिख वुड विन अल्टीमेटली।
और इसी के साथ ही जो पाकिस्तान टाइम्स है वो इसको प्रोजेक्ट करते हैं कि जो अकाली दल का ने ऐलान किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम पानी खुराक जितना भी है दूसरी स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को नहीं जाने देंगे। और उसके बाद फिर ये चीज जो है वो चलती रहती है। और उसके साथ जो है वो फिर कई आते हैं कि भी जो सिख्स वर अटैकिंग द हिंदूज एंड दे वर armed with machine guns, grenades, and they were attacking different Hindus in different cities of India. 9 जून को बलजीत सिंह मलिक का एक कॉलम छपता है सिख कॉज थ्रेट टू इंडियन यूनिटी। उसके साथ संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी की बहुत बड़ी तस्वीर जो है वो भी छपती है। और इसका टेक्स्ट जो है ना वो नहीं पढ़ा गया। आई वाज इंटरेस्टेड क्योंकि जो इसका जो टाइटल है वो तो ये बता रहा है कि ही वाज एंटी सिक्स, लेकिन उसके एक दो जो मैंने सेंटेंसेस पढ़े हैं वो ऐसे नहीं दे रहे कि बलजीत मलिक जो हैं वो कोई एंटी सिक्स हैं, बट इट्स येट टू बी डिसाइडेड whether he was pro संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला और अगेंस्ट। लेकिन जो उसका जो कॉलम है उसका टाइटल है सिख कॉज थ्रेट टू इंडियन यूनिटी। तो आई डोंट नो व्हाट इज इन इट। तो 3 जून का जो फिर उसमें लिखा है जी की खबर छपती है कि जो 1400 are still in Pakistan and they have refused to enter Indian areas or they had to disembark from the train. तो उसके बाद एक जो लोक दल पार्टी है, लोक दल पार्टी के जो प्रधान हैं तो चरण सिंह है गालिबन इनका नाम। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने सपोर्ट किया है दिल्ली को और दरबार साहब के ऊपर हमले की इन्होंने भरपूर हमायत की है। जितनी अपोजिशन पार्टी चरण सिंह उनके प्रधान का नाम है। अच्छा, फिर उनकी एक खबर ये छापता है पाकिस्तान टाइम्स वाला कि 400 सिख रिवोल्टेड इन कि जो 400 लोगों ने इनके खिलाफ ये छपता है ज्ञानी जैल सिंह कि ही कैंसल्ड ऑल अपॉइंटमेंट्स और ही वाज अनवेल एंड ही वाज नॉट गोइंग टू मीट एनीवन। तो इससे महसूस होता है कि पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर है। दरबार साहब के ऊपर जो अटैक है ये जो चल रहा है और इसके जो लिखा है कि इसके कश्मीर के ऊपर भी बहुत ज्यादा असरात हो गए। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान इस सानिया से अलग थलग है और लेकिन दुख की नजर से इसको देख रहा है और उसकी जो जितनी भी पॉलिसी है दैट्स वेरी केयरफुल। उसके बाद दूसरी जो अखबार है डेली नौए वक्त है। तो डेली नौए वक्त जो है ये प्रो मुस्लिम लीग न्यूज़पेपर था। इट सपोर्टेड पाकिस्तान मूवमेंट। ये राइटिस्ट राइट विंग का इफ this newspaper was supporting Pakistan movement, so definitely it was not taking up the Sikh questions at that time. लेकिन अब आप देखें कि इसका जो रुझान है वो बहुत मुझे अवामी नजर आया है और जो लैंदा पंजाब है या पाकिस्तान है इसमें जो अवामी जज्बात हैं उसका वो एक तर्जमान नजर आता है जो नौए वक्त है। और वो बिल्कुल सिखों के बारे में दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, जो सेपरेटिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता और कोई खबरों में सिखों के खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल नहीं करता। वो इनको अकाली सिख कहता है। जितने भी यहाँ पे जितने भी हैं लोग जो हैं जो दरबार साहब में जिन्होंने पनाह ली हुई थी उनको अकाली सिख कह के वो मुखातम करते हैं जितनी भी खबरें हैं। और वो मजहबी मुकामात यानी जो दरबार साहब की जो तकद्दुस है जो पाकीज़गी है उसकी बात करते हैं कि जो पवित्र जो स्थान है जो धर्म स्थान है उनको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए। उनका यानी जो रुझान है खबरों का वो इस लिहाज से। और वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बयानात को बहुत लीड के साथ वो छापते हैं।
और उन्होंने एक बाकायदा बहुत बड़े बॉक्स में एक चीज छापी हुई है कि मोरारजी देसाई ने कहा है कि जो सिखों, ये जो दरबार साहब के ऊपर बहुत पहले हमला कर देना चाहिए। और इस तरह जो कर्फ्यू, अखबारात पर पाबंदियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई कि जो वहां पे अखबारात के ऊपर पाबंदी, बैन कर दिया गया। ये बहुत बुरी बात है और इनको जो इंफॉर्मेशन शुड कम आउट, पानी इसको बंद कर दिया गया है। फिर 7 जून को ये खबर छपती है कि ठीक, तो परहैप्स ये इस तरह ये है कि जो पहले खबरें हैं कि भी ऐसे बयान देते हैं कि जी कहा जी कि हम पाकिस्तान जो है वो चले जाएंगे। हालांकि जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की जो धर्म है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अपने पंथ को छोड़ के आप भाग जाएंगे। तो इसके बावजूद जो प्रोपेगेंडा है वो इस तरह चलता रहा। उसमें शायद एक स्ट्रेटेजी भी थी, जैसे ज्ञान सिंह संधू जो हैं वो अपनी किताब एन अननोन कॉमन, कनाडा में ये किताब छपी, इट्स वेरी गुड बुक, ज्ञान सिंह संधू की किताब है। सो ही राइट्स इन हिज बुक एन अनकॉमन रोड कि जगजीत सिंह चौहान वाज propagating in Canada, in Canada and in United States of America, that Sant Jarnail Singh Bhindranwale was in Pakistan. So he himself traveled from Canada to Pakistan, and he tried to trace the factual position, but he was sure that it was just propaganda, and the ultimate choice of Sant Jarnail Singh Bhindranwale was to sacrifice his life. तो इसी लिहाज से वो उन्होंने कहा कि भी ये ऐसी बात नहीं थी। तो उसके बाद ये खबर आती है कि अकाल तख्त साहब का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया। अब आप देखें कि ऐसा लगता है कि जो नवाए वक्त की जो पॉलिसी है या उसमें खबर देने वाले लोग हैं वो दे वर वेल अवेयर ऑफ द सिख स्ट्रगल, और सिख स्ट्रगल की जो उसमें जो उसके धर्म के लिहाज से जो उनकी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दे वर वेरी मच क्लियर अबाउट दैट, और उनके वो तकद्दुस का, उनकी पाकीज़गी का बाकायदा ख्याल रखते हैं। 10 जून को खबर छपती है कि सिखों को 1947 में तवक्कुआत के बरक्स हालात का सामना, कि जो सिख्स वर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड एंड डिसेंट एटीट्यूड फ्रॉम हिंदूज, बट इन इंडिया दे आर फेसिंग अदरवाइज। सो फिर उसके बाद डॉक्टर जगजीत सिंह का बयान है कि इंदिरा गांधी की हुकूमत सिख नौजवानों को टारगेट करना चाहती है। तो इंदिरा गवर्नमेंट want to eliminate Sikh youth from पंजाब। फिर एक खबर आती है कि छापते हैं कि समाधि महाराजा रंजीत सिंह बिल्कुल सुनसान वीरान पड़ी है, उदास पड़ी है, और बरतानिया से आए हुए सिख खामोश हैं। And when people question, they don't reply. वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखते हैं कि वो हसरत की तस्वीर बने, एक गम की तस्वीर बने। तो पंजाब के मुसलमान से सवालात करते थे मगर वो कोई जवाब नहीं देते। फिर उसके बाद खबर छपती है कि दरबार साहब में 2500 to 2500 सिख वर किल्ड और 500 भारतीय फौजी जो हैं वो हलाक हुए। फिर 10 को ही जून को खबर छपती है कि भारतीय अखबारात ने जनरल संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की किरदार कुशी शुरू कर दी है, और उनके ऊपर जराइम पेशा और इस तरह की घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, कैरेक्टर असोसिएशन करना शुरू कर दिए एक पॉलिसी के तौर पे। बट सिक्स वर काउंटरिंग दिस कॉन्स्पायरेसी, तो इस चीज को वो कह रहे हैं। उसके बाद उनको खबर उन्होंने छापी है कि जो पंजाबी हिंदू हैं वो सिख तहरीक में शामिल नहीं हुए। फिर 12 जून को खबर छपती है कि बागी सिख फौजियों के खिलाफ फजाइया हरकत में आ गई। रामनगर, बम्बे, पूना शहरा, महाराष्ट्र, कश्मीर में सिख फौजियों की बगावत हो गई। तो रंजीत सिंह दयाल मुसलमानों का दुश्मन था, अब सिखों का भी दुश्मन निकला। So this was the situation
और उसके बाद 16 को ये खबर एक खास एडिशन छापता है रोजनामा नवाए वक्त लाहौर, पूरा एडिशन, पूरा न्यूज पेज वो छापता है, जिसमें पिंडरावाला, संत जरनैल सिंह पिंडरावाले की बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके बाद की जो तहरीक है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, और वो पूरा जो इंडियन पॉलिटिशियन सो अखबार कहता है कि ये हिंदू महासभाई जो आरएसएस का जो किरदार है ये उसको जाहिर करते हैं। सो आई कंक्लूड कि जो अटैक ऑन दरबार साहब है उसके जो इंडिया डिक्लेयर्ड इट अ सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड खालिस्तान, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अवाम में बातें जरूर थी, मगर प्रेस में ऐसा कुछ नहीं था कि दे वर सेपरेटिस्ट, they wanted Khalistan and they were fighting for Khalistan. They had specific demands mentioned in Anandpur Sahib resolution. फिर ये इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान प्रोवाइडेड हैवी वेपन्स, ये भी गलत है। और हमें नजर आता है कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत मोहतात पॉलिसी है, और इस हुकूमत में बिल्कुल ऐसी कोई उनको हमें बयान मुझे नजर नहीं आए, जितनी मैंने अखबारात पढ़ी हैं, कि उसमें मिनिस्टर्स या किसी किस्म के ऐसे बयान दें जो प्रोवोकेटिव हो। उसके बाद ये इल्जाम लगाया जाता है कि जो पाकिस्तान ट्रेंड द सिख्स, ये भी गलत है, और इस तरह की मुझे कोई तासुर नजर नहीं आया, किसी किस्म का कोई बयान या आर्टिकल में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि इस तरह का किसी। उसके बाद ये है कि सिख अटैक्स ऑन हिंदूज, ये भी मुझे गलत नजर आया कि ये सिख बिलीव्ड नो अटैक ऑन इनोसेंट, दे प्रूव्ड इट थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। और इसमें भी बार बार जो है वो संत जरनैल सिंह पिंडरावाले अपनी तकरीरों में कह रहे थे कि किसी हम इनोसेंट या जो मजलूम है उसके ऊपर, या जो जिसका कोई कसूर नहीं है उसके ऊपर हम कोई हमला किसी किस्म के नहीं कर सकते। तो खबरें जरूर शाया हुई, मगर मुझे काउंटरिंग टैक्टिक लगता है। इनफरादी हमले हो सकते हैं, मगर संत जरनैल सिंह पिंडरावाला की ये पॉलिसी ना थी। वो तो अंदर बैठे हुए थे, हमला करने के लिए तो बाहर जाना होता है, और बाहर जाके जो है वो कुछ करना होता है, ट्रेनिंग जो है वो बाहर होती है। तो इस लिहाज से ये सारा एक प्रोपेगेंडा महसूस होता है कि एक स्टेट की पॉलिसी थी टू 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 कर्ब पंजाब, मेरा ख्याल है यही मुझे नजर आता है। तो दिल्ली एंड हिंदू मेजोरिटी wanted Punjab or Sikhs to survive as slaves. They must submit to the center without question and demand. This is the question जो मुझे महसूस हुआ है कि फिर वो ये चाहते थे कि ये क्वेश्चन ना करें, कोई डिमांड ना करें, और एक स्लेव की तरह हमें सबमिट करें। संत जरनैल सिंह पिंडरावाले was a true Sikh of Guru Gobind Singh Ji who sacrificed his life for the Sikhism and Sikhs. कहा जाता है कि अकाल तख्त में पनाह नहीं लेनी चाहिए थी ताकि हमला ही ना होता। भाई पनाह ही तो ली थी, हमला तो नहीं किया था किसी पर। जो बैठे थे बैठे रहने देते। मजहबी स्थानों में पनाह लेने का मतलब ही यही होता है कि वो नहीं लड़ना चाहते। ये पॉइंट टू बी नोटेड कि वो लोग जो है थ्रू आउट हिस्ट्री आप स्टडी कर लें, जो 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 धर्म स्थानों में पनाह लेते हैं, बैठते हैं, उनका जो टेसेटली वो जो बात कर रहे होते हैं ना, उनका मैसेज ये होता है। और हम ऐसी जगह पे कहते हैं कि जिनका आप लिहाज करेंगे आप इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। महीना इंतजार कर लेते, साल कर लेते, 2 साल इंतजार कर लेते, दरबार साहब के ऊपर हमले की क्या जरूरत थी। और अगर संत जरनैल सिंह कोई टारगेट था तो फिर बाकी 137 या दर्जनों गुरुद्वारे थे, उनके ऊपर हमला क्यों किया गया? वहां तो संत जरनैल सिंह पिंडरावाले नहीं थे। सिख मुतालबात क्यों नहीं मानेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। इन मुतालबात में तो कोई खालिस्तान का मुतालबा नहीं, तो इनको क्यों नहीं माना गया? जो अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन है उसमें कौन सा जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नजर आती, कौन सा ऐसी चीज है वो? So I think that it was a Zia government. It was very careful during this period. No involvement of Pakistan
I feel from these newspaper. So पाकिस्तान में जो पंजाब के लोग हैं वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले से मोहब्बत करते थे और सिखों और दरबार साहब पे हमले को जुल्म समझते थे। और इससे अंदाजा होता है कि इसमें अवाम जो है वो सिखों के साथ थी, और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को आज भी वो आइडियलाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।